Good morning, children. Today we are going to learn something different. Okay? आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं. Today we are going virtually to Uttarakhand state. Okay? Do you know what is a state? आपको पता है स्टेट के बारे में कुछ? जैसे कि like I think you have heard this uh, name of the states Karnataka, Maharashtra, like this state's name I might be you have heard. Okay, so like the Karnataka and Maharashtra state, there is a Uttarakhand. Okay, in India there is a Uttarakhand state. Okay, actually we we are having 28 states. Okay, in India there are total 28 states, but this Uttarakhand is 27th state. Okay, this is a 27th state of this all 28 states. Okay, so children, to Uttarakhand, we can go by a road, by a train, or by an aeroplane also. Okay, see, this is the way we can go to Uttarakhand. See, you can see everywhere greenery, everywhere trees are there, everywhere mountains are there. See, you can see in this picture so many mountains are there, so many trees are there, isn't it? Okay. See, children, the yellow color map is of India. Okay, this is the map of India. Okay, and in the violet color, you can see some part in the violet color that is Uttarakhand. Okay, that is called as Uttarakhand. The violet part which you can see in the map, that is called as Uttarakhand. Okay, so children, Uttarakhand state is divided into two divisions which are further divided into 13 districts. Okay, 13 districts. देखो अभी कर्नाटक, हाँ, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक. कर्नाटक इज अ Karnataka is a state. Okay, and in these states there are so many cities. Okay, the Karnataka is divided into so many cities like Bangalore, like Gulbarga, like Belgaum. Okay, वैसे ही उत्तराखंड भी बहुत सारे cities में, बहुत सारे districts में divide हो गया है. Okay, so you can see all the districts in this violet color part. Okay, there is a Dehradun, Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag, Tihari, Pauri, Haridwar, Almeda, Bageshwar, Pithoragarh, Champawat, Nainital, Udham Singh Nagar. These all are districts of Uttarakhand. Okay, the and the most important thing is you can see Dehradun. Okay, you can see Dehradun. The Dehradun city is a capital of Uttarakhand. Okay, capital means राजधानी, जिसे हम हिंदी में राजधानी, मराठी में भी हम राजधानी ही बोलते हैं. ओके, डू यू नो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आवर इंडिया? आपको पता है इंडिया का कैपिटल, इंडिया की राजधानी कौन सी है? Yes, the capital of India is New Delhi. Okay, and the capital of our Karnataka is Bangalore. Okay, जैसे कंट्री का कैपिटल रहता है वैसे स्टेट का भी कैपिटल रहता है. ओके, वैसे ही उत्तराखंड का कैपिटल कौन सा है? देहरादून. उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून. ओके चिल्ड्रन, so we will move further. Okay, see, now we will see the cooking. Okay, the special equipments which they are using for cooking. Okay, after this we are going to see the food, famous food of the Uttarakhand. Okay, you can see two types of vessels are there. See, usually we used to mama, we or your mama prepared food for you in aluminum vessel. Okay, usually we use
aluminum vessel. Previous also we were using only this type of vessels only, but now we are using aluminum vessels. But in the Uttarakhand, those peoples are these peoples are use this type of vessels, and they called it as bhaddu. Okay, the special pot. This special pot is called as bhaddu. Okay, these are the special equipments which they are using for preparing food. Okay, these are the copper vessels. Okay, इनको क्या कहा जाता है, कॉपर वेसल्स कहा जाता है, और उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज में इसे भद्दू कहा जाता है. ओके, whatever food they are going to prepare, they prepare in this type of vessels only. I will show you. Okay, in the next slide I can show this. See, in the occasion, in the festival, in the function, whatever it is, even regular food also they prepared in this type of copper vessels only, in this type of copper vessels only. Okay, and we use gas stove to prepare all the food, but those people use slow fire. Okay, those people use slow fire. आपको चूल्हा पता होगा ना, चूल्हा पता है ना आपको. तो वो जो उत्तराखंड में जो लोग खाना बनाते हैं, वो गैस स्टोव पे नहीं बनाते, वो स्लो फायर चूल्हे के ऊपर वो खाना अपना पकाते हैं. ओके, now see children, this is the famous dish of Uttarakhand. Okay, उत्तराखंड की ये स्पेशलिटी है, ये स्पेशल डिश है जिसका नाम है काफुली. They called it as kafuli. They prepared this dish with so many leafy vegetables like palak, spinach, like fenugreek leaves, जिसे आप हिंदी में मेथी बोलते हो. Okay, this type of leafy vegetables used to prepare this kafuli. Okay, this is a picture of kafuli. Now children, see, do you know what is the famous sweet dish of Belgaum? आपको पता है बेलगाम की famous sweet dish कौन सी है? Tell me. Yes, कुंदा. हमारे बेलगाम की स्पेशलिटी क्या है? कुंदा. जिसे हमारी स्पेशलिटी है कुंदा, वैसे ही so many states, so many cities have their special food, have their speciality in some food. Okay, like that only Uttarakhand is famous for bal mithai, arsa, and singori. Okay, bal mithai, the first one is bal mithai. See, this is a brown chocolate like a fudge. Okay, ये जो बाल मिठाई है वो ब्राउन चॉकलेट से बनती है. इट मेड विथ ब्राउन चॉकलेट एंड रोस्टेड खोया, जिसे आप खवा बोलते हो ना, वो वाला. ओके, ये मिठाई जो है वो चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट और रोस्टेड खोया से बनती है. और उसके ऊपर जो आपको व्हाइट कलर के छोटे 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 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना, डू यू नो व्हाट इज दैट? Those are sugar balls. Okay, after preparing this mithai, they roll it in the white sugar balls. They coated it with the white sugar balls. Okay, so this is called as bal mithai. The second one is arsa. Okay, the name of the second dish, sweet dish, is arsa. It is a traditional sweet of the Uttarakhand. Okay, this sweet made with the rice flour and sugar syrup. Okay, जिसे हम हमारी स्पेशलिटी है, वैसे ही उनकी भी फूड में स्पेशलिटी है. ओके, जो ये अरसा है वो राइस फ्लावर और शुगर सिरप से बनता है. ओके, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज सिंघोरी. व्हाट दे कॉल्ड इट एज सिंघोरी. इट इज आल्सो अ स्वीट डिश made with milk. Okay, made with milk. After making it, they wrap it with the leaf. Okay, वो क्या करते हैं, ऐसे ही नहीं रखते हैं, लीफ में रैप करते हैं. Okay, now we'll see the all of the types of food,
which they prepared. Okay, see, you can see here so many varieties of food are there. Okay, so many foods are here, so many varieties are there in all the occasions, functions या फिर festival. They made this all the food. They made non-veg also and they prepared veg also. Okay, in the veg, you can see so many vegetables are here, so many sweets are here. See, I have told you about kafuli, bal mithai, singori. See, you can see those sweets and the vegetable which I have told you in this dish, you can see here also. Okay, and even they prepared non-veg food also. Okay, next we have seasonal availability. Okay, seasonal availability जो कि फ्रूट्स है, मेजर क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, सो मेनी फ्रूट्स, हाँ, वहाँ पे पकते हैं, वहाँ पे राइस बनता है, वीट बनता है, बार्ले, कॉर्न, ये सारे जो क्रॉप्स है वो उत्तराखंड में पकाए जाते हैं। ओके, उत्तराखंड में बनाए जाते हैं। देन फ्रूट्स, these are the seasonal fruits. You can see the picture of lychees and apples. These are the seasonal fruits of the Uttarakhand. Okay. Now we'll see after the food. I will see their costume, their attire. Okay. See, children. In the both of the picture, you can see how they attire themselves. How is the attire of their? Okay. See, ladies wears this type of ghagra choli in regular. Okay, they wear this regular, but in the occasion they wear colorful ghagra choli with all these ornaments. In the second picture you can see all the ornaments. Okay, the traditional dress of women in Uttarakhand remains sarong, a mental type of dress. Okay, tightened with the blouse and an odni and khorpi. Okay, जो वो सर पे उन्होंने ओढ़नी बांधी है ना, उसे क्या बोलते हैं, ओढ़नी या फिर खोरपी। ओके, और वो देखो उन्होंने क्या पहना है, चनिया चोली या फिर घाघरा चोली पहना है। ओके, सी, you can see the nose ring, how big it is. See, at the in the occasion they wear big nose ring, this type of necklace, and they called it as galoband. What they called it, they called it as galoband. Okay, then a large nose ring, नथ, जिसे हम नथ बोलते हैं, उसे वो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लार्ज नोज रिंग। ओके, सो चिल्ड्रन यूजुअली डेली दे वेयर a common means a different type of clothes every day like ghagra choli, but when they have any occasion, when they have any function or any festival, they usually wear rangwali pichora. Okay, rangwali पिछोरा, and most of the married women जिनकी शादी हुई है वो रंगवाली पिछोरा ही पहनते हैं। ओके, so this type of the dress they wear regularly, and this type of ornaments also they wear. After the attire of ladies, we can see here the attire of gents, the boys. Okay, see, there are three types. Okay, there are three tribes. First is Garwali, second is Kumon. Okay, and there are so many tribes like Jaunsari, Bhotia, ऐसे बहुत सारे क्या है, अलग अलग पहचान वाले लोग वहां पे हैं। ओके, तो ये जो गढ़वाली मेंस है वो क्या पहनते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं। ओके, या फिर कुर्ता धोती पहनते हैं, या फिर जो रेगुलर ड्रेस भी रहता है, जैसे कि आपके पापा पहनते हो होंगे टी शर्ट पैंट, शर्ट पैंट, वैसे भी वो पहनते हैं। लेकिन यूजुअली जो ओल्ड पीपल है या फिर जो मतलब ओकेजन रहता है, जब फंक्शन रहता है, तब ये जो मेंस है, ये जो मेन है, ये जो
जेंट्स है वो कुर्ता पैजामा और कुर्ती धोती दोनों में से कुछ भी पहनते हैं. ओके. See children, this is the place उत्तराखंड. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्लेस है. See, everywhere we can see greenery only. Everywhere trees are there. So nice place. See, Uttarakhand is also known as Uttaranchal. Okay, and one more thing I want to tell you that Uttarakhand is also known as Devabhumi, the land of the gods. Okay, उत्तराखंड का निकनेम है क्या है, जैसे आपका भी निकनेम रहता है, आपका स्कूल में एक नाम रहता है और आपको घर पे प्यार से एक नाम से बुलाते हैं, वैसे ही उत्तराखंड का निकनेम, उत्तराखंड का एक जो और एक अलग नाम है वो है देवभूमि, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है लैंड ऑफ द गॉड्स. ओके, why we called it as land of the gods, because there are so many temples. Okay, जो भी चार धाम की यात्रा, आपको वर्ड सुना होगा, यू हैव हर्ड दिस सॉन्ग, हर्ड दिस वर्ड, दैट इज चार धाम की यात्रा. सो दोस चार धाम आर इन द उत्तराखंड ओनली. सो because of that, the nickname is of Uttarakhand, the nickname of the Uttarakhand is land of the gods, Deva Bhumi. Okay, so now I'm going to tell you कि उत्तराखंड जो नाम है वो कैसे पड़ा. ओके, उत्तराखंड जो नाम है वो कैसे पड़ा. This name they have taken from the Sanskrit word. Okay, this name they have taken from the Sanskrit word. In the Sanskrit, Uttara means north, north side. Okay, Uttar side, north side. Okay, और खंड, उत्तर का मीनिंग है नॉर्थ और खंड का जो मीनिंग है वो है अ पार्ट ऑफ अ कंट्री. ओके, एक कंट्री मतलब इंडिया हमारा देश है, इंडिया हमारी कंट्री है, उस कंट्री का एक छोटा सा पार्ट यानी कि खंड. सो उत्तर और खंड ये दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं, उत्तराखंड. ओके, सो यू कैन सी Himalayas, you can see so many greenery, you can see so many green trees are there. See how lovely picture it is, how lovely state it is. So Uttarakhand is known as land of the gods, land of the gods यानी कि देवभूमि. So now we are going to see the temples which are there in the Uttarakhand. मैंने आपको चार धाम के बारे में बोला है. So चार धाम में यानी उसमें चार अलग अलग तरीके के भगवान के स्थान है. जैसे कि आप अभी आप देख रहे हो गंगोत्री. द फर्स्ट इज गंगोत्री. This is the temple which you can see on your screen. This is called as Gangotri. Okay. उसे क्यों गंगोत्री बोला जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं. See children, you can see here the water, the river. गंगा इज अ रिवर. आपको ये तो पता है कि गंगा जो है वो एक नदी है, वो एक रिवर है. वो यहाँ से उगम, उसका उगम स्थान क्या है, ये, इसीलिए इसे यहाँ पे गंगोत्री का नाम बोला जाता है. यू कैन सी ब्रीफली हियर. सी चिल्ड्रन, द टेम्पल इज मिडल, द टेम्पल इज मिडल इन द रिवर ऑफ गंगा. जो टेम्पल है गंगोत्री, ये जो टेम्पल है वो गंगा नदी के बीच में है. गंगा नदी उसके बाजू में से बहती हुई नीचे की ओर आती है, तो फिर इसे क्या बोला, इसीलिए इसका नाम क्या है, गंगोत्री टेम्पल. गंगा जो है उसका, उसकी पूजा इस टेम्पल में की जाती है. द पीपल वर्शिप्स टू गंगा इन दिस टेम्पल. ओके, देन वी हैव अ पिक्चर ऑफ केदारनाथ. सी behind the Kedarnath temple, you can see big Himalayas, you can see big mountains. Yes, those are in white. You can see these are in white. So children, have you seen Kedarnath movie of Sushant Singh? Yes, the shooting of movie they have done in the Kedarnath.
See, this is the Kedarnath temple. This is the temple of Lord Shankar, Lord Mahadev. Okay, so people, so this is also a part of the Uttarakhand, a part of the चार धाम. Okay, so ये है दूसरा धाम जिसका नाम है केदारनाथ. So people worships Lord Mahadev, Lord Shankar in this temple. Is the name of the temple is Kedarnath. After Kedarnath, there is a place called as Yamunotri. You can see full temple is in white color. Okay. Do you know like Ganga river, there is a Yamuna river also. Okay. There is a river, one more river that is called as Yamuna river. Yamuna जो नदी है उसका स्थान भी यहीं पे है जो कि उत्तराखंड में है. इसे बोला जाता है, ये मंदिर जो है, it known as, this temple is known as यमुनोत्री टेम्पल. क्या कहा जाता है इस मंदिर को? यमुनोत्री टेम्पल. इसका नाम है यमुनोत्री टेम्पल, यमुनोत्री मंदिर. ओके. फिर यमुनोत्री के बाद आता है बद्रीनाथ. क्या आता है? यमुनोत्री के बाद आता है बद्रीनाथ. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चार धाम. ओके, सो दीज ऑल आर दी चार धाम: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड this Badrinath. Okay, you can see a beautiful temple of Badrinath temple. So these is the information. These are the things. Okay, these are the so many things are there in the Uttarakhand. So we can see it, we can feel it. Okay, we can see so many beautiful things in the Uttarakhand. So children, listen this video, watch this picture very carefully. You can see beautiful greenery, you can see beautiful Himalayas in the Uttarakhand. So children, this is the information about the Uttarakhand state. Okay, so children, thank you so much, and I hope you like this virtual tour. Thank you so much. Bye children. Take